So we learned कि physical quantity हर वो quantity होती है जिसको हम measure कर सकते हैं. उसका हमें magnitude given होता है और unit given होता है. Magnitude हमें बताता है कि हमारी quantity का size क्या है, उसकी amount क्या है. For example, we can have 4 or 8 meters, newtons or kilograms. अब ये जो magnitude है 4 और 8, ये हमें differentiate करने में मदद कर रहा है कि हमारा जो भी physical quantity है उसका size क्या है. हमें इसको देखने से पता चल रहा है कि 4 meters is a shorter distance and 8 meters is a longer distance. अब ये meters, newtons और kilograms, ये इसका SI unit है. This is helping us to identify which physical quantity we're talking about. Meters is indicating that we're talking about length. Newtons is indicating we're talking about a force. Kilogram is indicating कि हम किसी mass की बात कर रहे हैं. अगर आप पहली लाइन में देखें तो 4 meters, 4 newtons, 4 kilograms. मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ एसआई यूनिट के डिफरेंट होने की वजह से हमें पता चलता है कि हम 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं. वी हैव स्केलर्स एंड वी हैव वेक्टर्स. स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मौजूद होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती. एंड वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होती हैं. अगर आपने कभी भी स्केलर क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करनी हो और आपको समझ में ना आ रही हो या भूल जाए कभी, तो यू गाइस जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्व्स वन क्वेश्चन. कभी आपने इस क्वांटिटी की डायरेक्शन सुनी है कि नहीं सुनी? फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर है. सो हैव यू गाइस एवर हर्ड द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर? No, that's right. We simply say कि आज 40 degrees Celsius temperature है, आज 38 degrees Celsius temperature है. We don't mention a direction कि वो east में, north में, south में, west में. Likewise, हम time की कोई direction नहीं देते. So वो quantities जिनकी हमारे पास direction मौजूद नहीं होती उनको हम scalars कहते हैं, और वो quantities जिनकी हमारे पास direction मौजूद है उनको हम vectors कहते हैं. अब scalars और vectors में जो quantities आती हैं उनको हम detail में discuss करेंगे in the next chapter, that is kinematics or motion. So I'm not going to spend more time on discussing these quantities for now. Then in the previous class, we also did an activity to put these scalars and vectors into their appropriate places. And we did some practice questions. Okay, so we started the second portion of our chapter, measurements. इसमें हमने जो measurement techniques discuss करनी है वो 3 physical quantities के लिए है. हमने लेंथ डिस्कस करनी है. लेंथ मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं और कैसे मेजर करते हैं वो डिस्कस करना है. हमने टाइम कैसे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए यूज करते हैं, और हमने वॉल्यूम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और उनके मेथड ऑफ मेजरिंग दोस फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कस करना है. लेंथ के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो है हमारे पास रूलर्स, टेप मेजर्स, ट्रांजल व्हील, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज. अब ये देखिए आप कि हमारे पास इतने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड इट कैन बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट समटाइम्स कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज करें. अपना अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए जरूरी है कि हमें उनके बारे में, उनकी रेंजेस के बारे में पता हो और हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन हो कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की है, मैक्सिमम 1 मीटर, उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर रूल्स या रूलर्स. जैसे कि आपके पास एक पेंसिल है, इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है, आप इसको स्केल से मेजर कर लोगे, जिसको हम मीटर रूल को हम अपनी डे टू डे लाइफ में स्केल भी कहते हैं. तो अगर आपके पास एक हाइट ऑफ अ टेबल है, इट्स 1 मीटर टॉल, you guys are going to use a meter rule to measure that as well. लेकिन अगर हमारे पास larger distances आ जाते हैं, 1 मीटर से बड़े distances up to several meters, उसके लिए हम यूज करते हैं टेप मेजर. जैसे कि अगर आपने ग्राउंड की लेंथ मेजर करनी है तो आप उसके लिए स्टील टेप मेजर यूज करोगे. अगर आपने कर्व सर्फेसेस मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेजर अ पर्सनस वेस्ट, यू आर गोइंग टू यूज अ क्लॉथ टेप मेजर. और अगर आपके पास सेवरल मीटर्स, लाइक मीटर्स में भी काफी ज्यादा बड़ी मेजरमेंट्स आ जाती हैं, तो आप ट्रंडल व्हील यूज करते हैं. हमारे जो रूलर की फ्रैक्शंस हैं, हमारे रूलर की जो शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट या फ्रैक्शन है वो मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर. व्हाट डज दैट मीन? कि आपके 0 to 1 के दरमियान आप अपने स्केल पर देखोगे देयर आर 10 फ्रैक्शंस या 10 लाइंस.
These 10 lines, every single line or every single fraction represents 1 millimeter. तो हमारा जो ruler है वो minimum 1 millimeter की length को measure कर सकता है. अब कुछ measurements ऐसी होती हैं जो 1 millimeter से भी छोटी होती हैं, जैसे कि copper wire का diameter है. You can't measure that using a meter rule. If you do that, you're probably going to end up with an inaccurate measurement. आपके पास शायद measurement आ जाए, आप किसी तरह निकाल लें, लेकिन it's going to be inaccurate. और हमें most accurate method चाहिए होता है. तो to measure very very small distances, जो कि हम meter rule से measure नहीं कर सकते, हम use करते हैं micrometer screw gauge. This instrument right here. Now, the parts of this instrument and how we use this instrument is only included in the syllabus of O-level students. So now we're moving on to our table. Is table में भी काफी वो points cover हो जाएंगे that we have discussed before. Okay, now I want you guys to memorize this table right now with me. These two parts are only in O-level syllabus. So I will not be stressing the IGCSE students to learn these two. O-level students, you have to learn these as well. Okay, let's go through this together and then I'll give you guys 2 minutes to memorize this. क्योंकि इसके आगे भी हमने अभी practice questions करने हैं. So I'm going to ask you guys randomly. Don't worry if you're not comfortable in answering at once. I'll give you time. So here we have some instruments to measure lengths. हमारे पास first instrument है हमारा meter rule. इसकी range क्या है? यानी कि किन लेंथ्स के लिए हम ये यूज करते हैं several centimeters से लेकर 1 मीटर तक की लेंथ तक. Okay, up to 1 meter. इसकी precision क्या है? 1 millimeter. Now, what is precision? If we have any instrument, इस पे आपको ये 0 to 1 की length तो नजर आ रही है, the bigger one that I've drawn here. This is 1 centimeter. लेकिन can you guys see that there are shorter fractions in between the 0 and 1? That every fraction represents 1 millimeter. ये हर fraction 1 millimeter represent करती है और इससे छोटी हमारे पास कोई fraction मौजूद नहीं है. हमारा scale minimum 1 millimeter की length को measure कर सकता है. So हमारे instruments minimum कितनी length measure कर सकते हैं या कितनी measurement minimum ले सकते हैं वो उस instrument की precision. Okay? So the precision of a meter rule or a scale or a ruler, however you like to call it, is 1 millimeter. The precision of a tape measure is also 1 millimeter. अब ये centimeters में भी लिखी हुई है. If you guys know कि 1 centimeter में 10 millimeters होते हैं. अगर आपने centimeters से millimeters में जाना है तो you guys have to multiply that value by 10. And if you have to move from millimeters to centimeters, you have to divide it by 10. Now, we are moving from millimeters to centimeters. अगर 1 millimeter है तो उसमें कितने centimeters होंगे? हम इस millimeter की value को 10 से divide करेंगे and we'll get the centimeter value. 1 millimeter divided by 10 is 0.1 centimeters. Okay, so the precision, यहाँ पे minimum ये instruments कितनी length measure कर सकते हैं? 1 millimeter. ये इनकी precision है. Okay, example क्या है हमारे पास? Tape measure के लिए a person's waist. To measure a person's waist. Meter rule के हमारे पास क्या example है? Height of a table. Okay, now these two measurements or instruments below ये O-level students के लिए हैं. ठीक है, आपने अभी सिर्फ ये 2 चीजें याद कर लेनी हैं. You can memorize these 2 things after the class. Vernier calipers वैसे अब syllabus से निकल चुके हैं, but the only reason I included them in the table is that past paper questions when you repeat हुआ है, so if you guys see this, it might become a little hard to choose the options. But you don't have to. I'll just put a little cross over here. You don't have to spend your time doing this. Just remember this little point that I'm going to put a dot on. This one, diameter of a test tube. वर्नियर कैलिपर्स यूज होते हैं हमारे पास किसी भी टेस्ट ट्यूब का एक्सटर्नल या इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए. जब भी आपको इस वायर का जिक्र आ जाएगा ना, you guys are going to mark micrometer screw gauge blindly. Don't think too much. You guys have other things to worry about. Okay? या बाद में याद कर लेना. अभी just memorize these 2 things and this. Okay, I'll start a 2 minutes timer. अब हम measurements लेते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि error ना आए.
Because we're humans, right? What is an error in the first place? जब हम कोई भी अपनी measurement लेते हैं, तो हमसे कोई गलती हो सकती है. That is an error. The name itself suggests what an error is. We're going to study a few types of errors, और हम देखेंगे कि हम उन errors को avoid किस तरह से कर सकते हैं. This is actually important for the practical paper as well. So please listen carefully. Okay. Now, we're going to see the error in our meter rule first of all. Whenever we have to read a meter rule, जब हमने scale को read करना होता है, तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि we position our eye correctly. अगर हमारी eye जरा सी भी disposition हुई from the correct position, it is going to give us a wrong reading. Now, what we need to do is that our eye is perpendicular to the scale. What does perpendicular mean? At 90 degrees. ये हमारा scale है, and this is the person's eye. It needs to be directly in front of the reading. हमारे scale में और हमारी eye में 90 degrees का angle होना चाहिए. यहाँ पे वो perpendicular होना चाहिए. If we move a little left or a little right, हमारी reading या तो actual reading से बड़ी हो जाएगी, या it's going to be smaller than that. And we don't want that. So, an error introduced by the incorrect positioning of the eye. हमारी eye की incorrect positioning की वजह से जो error आता है हमारी reading में, we call it the parallax error. And how do we avoid that error? We avoid that error by positioning our eye perpendicular to the scale reading. ये तो हमारे पास ruler था. We can have another example. Now, we're going to see a measuring cylinder when we discuss volume. So, for now, the only thing that you guys need to see is कि अगर हम लोग volume measure कर रहे हैं of a liquid in a measuring cylinder, तो हमारे पास यहाँ पर भी our eye needs to be perpendicular to the scale. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो there will be a parallax error. Okay? If we disposition our eye, there will be a parallax error. To avoid the parallax error, our eye needs to be correctly positioned perpendicular to the scale of our instrument. This was the parallax error, and we also learned how to avoid the parallax error. अपनी आंख को बिल्कुल perpendicular रखने आपने scale से. That was it about parallax error. Let's move on to zero error now. हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसके जब जीरो मार्क पे कोई एरर कोई भी कहने आपकी प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स द जीरो एरर. यू गाइस मस्ट हैव सीन कि वुडन जो स्केल्स होते हैं, व्हेन दे आर worn out ड्यू टू wear and tear, उनके एजेस राउंड हो जाते हैं. उनके एजेस राउंड होने की वजह से उनका जीरो फेड हो जाता है. यहाँ पे इफ यू गाइस हैव प्लास्टिक रूलर्स, कभी कभी उनके एजेस टूट भी जाते हैं. If you guys have pets, I'm not talking about animals only, if you guys have younger siblings, they're also going to never allow you to have a fine ruler. Aapka ruler automatically toot jayega. So if you guys have ever faced that situation, jab aapka ruler automatically aapke bag se gayab ho jata hai aur agle din aapko toota hua milta hai, so you guys would definitely know कि zero error क्या होता है. फिर आपको मुश्किल से क्लास में रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं. Now, I will give you an example of how we can deal with this zero error. अगर आपके पास एक ब्लॉक है and you are trying to measure its length, और आपके पास zero error आया हुआ है आपके इंस्ट्रूमेंट में, अगर मैं ये ब्लॉक here, if I put my block here, let's color coded something else, yellow. If I put my block like this, और मैं इसकी रीडिंग रिकॉर्ड करती हूँ, this one right here, 3.2 centimeters. Do you guys think this is the right reading? Yes. Okay. Is there any more answers to that? Any different answers? Oh no, miss, it's not, because the zero is faded. Yes, that is right. It's not the right reading. Why? Because in this reading हम लोग ये भी add कर रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर है ही नहीं.
तो हम लोग तो ये इस रीडिंग का मतलब क्या है? इस रीडिंग का मतलब है कि आपका ब्लॉक इतना बड़ा था क्योंकि आपने ये लेंथ भी ऐड कर लिया जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं थी. ओके, सो दिस वुड बी द रॉन्ग रीडिंग. तो हम किस तरह इसको करेक्ट करते हैं अगर हमारे मीटर रूल में 0 एरर हो? What we do is that, let me cut this. What we do is that we start measuring from another point. हम किसी और पॉइंट पर अपना ब्लॉक रखते हैं. Okay, और फिर we're going to record the two readings at the edges. एक ये एज है हमारे पास और एक ये एज है हमारे पास. फाइनल रीडिंग को आप अपनी L2 कह लें, इस इनिशियल को आप L1 कह लें. Then you're going to subtract L2, you're going to subtract L1 from L2. L2 minus L1, which is 5.3 minus 2.4, will be your actual right answer. Is there Ma'am, any we can confusion? plot the object at any point. Yes, you can put your object at any point. Any point away from this 0. Not over here. You can start from here. Then as well you'll get the right reading. आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपका ये जो यहाँ से टूटा हुआ रूलर है या फिर it's like faded, you're not including that length in your recorded length. Other than that, you can go at any better point from here, 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 or anywhere else. Okay, is that clear? Yes, Miss. Yes. Okay, great. Now let's do the question. I'll give you guys 10 seconds to look at this again because we're going to do past paper questions. 2 questions for that. Okay, I hope you guys are done. Let's move on to our questions. इस चैप्टर के मोस्टली MCQs आते हैं, बहुत कम theory questions हैं. So that is why it has greater chances of making a mistake. क्योंकि MCQs में आपको एक ही आंसर ठीक होता है. If you guys mark it, you get the point. If you guys are even like having the slightest mistake, you will lose the mark. Okay, before we do the question, I want you guys to learn one more thing: how to attempt questions. Whenever you read a question, आपने साथ साथ अपनी information और अपने data को mark करना है. How? I'll tell you. For example, I'll start reading the question. A length of copper wire is labeled length 30 meters and diameter 0.50 mm. मैं क्या करती थी? I would make a box on the numerical value, और जिस चीज की बात हो रही होती थी, I would draw a line under that. So length is 30 meters. Diameter is 0.50. This is the diameter. और बात किस चीज की हो रही है? Wire की बात हो रही है. Now, which instruments are most suitable to measure accurately the length and the diameter of the wire? क्या question पूछे? Instruments पूछे. अब इस information को mark करने का क्या फायदा है? You won't have to read the question over and over and over again. अगर आपको कभी कोई multiple choice question नहीं समझ आ रहा होता, you just mark the data, go to the next question, and once your paper is done, उस question पे वापस आएं and do that again. Mostly ये होता है कि when you come back to the question, तब तक आपके पास time almost खत्म हो गया होता है, सिर्फ 4-5 मिनट रह जाते हैं. अगर आपने अपना data mark किया होगा, तो आपको दोबारा से question पढ़ने में time waste नहीं होगा. आप brainstorm करके you can simply mark your answer whatever it would be. Theory paper में भी यही होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि you go through the question all over again जब आप part B या C पे पहुंच जाते हैं. जब आप part C पे पहुंचे होते हैं तो most of the times हमें भूल जाते हैं कि शुरू की information क्या थी. If you guys have marked it in the very beginning in this way, आपको दोबारा से question नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप अपने parts easily question के solve कर पाएंगे. Now, once we have marked the important data in the question, what is the next step? You read the headings of the table. क्योंकि यहाँ पर किस सीक्वेंस में बात हुई है, लेंथ और डायमीटर की बात हुई है. कभी कभी वो इसको रिवर्स कर देता है. They would mention diameter here, length here, and you would be a little like, if you have not looked at the heading, you are more likely to make a mistake. इसलिए सबसे पहले अपनी information mark करें, फिर अपने table की headings को अच्छी तरह से देखें, and then pick an answer whatever you want. I'll give you guys a hint. And then I want you guys to take a minute and drop your answers in the chat box.
and then we'll discuss the final answer. अब आप देखें कि वायर की बात हो रही है, डायमीटर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? पिक दैट वन. लेंथ हमारी 1 मीटर से बड़ी है. मैंने आपको बताया था पीछे के लेसन में कि सेंटीमीटर से 1 मीटर की लेंथ तक हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और 1 मीटर से बड़ी लेंथ के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. आपने 1 मीटर से बड़ी लेंथ का इंस्ट्रूमेंट पिक करना है. Whether it's ruler or tape, you guys choose it. You have 30 seconds to drop your answers in the chat box. All right, so we have two options, B and D. Let's discuss them. They're talking about the wire's diameter. मैंने आपको बताया था, whenever it's about wire's diameter, blindly mark micrometer. Micrometer is the answer. Now it's either option B or option D. Now, is it a ruler or a tape measure? I told you guys that when we have a measurement from centimeters up to 1 meter, उसके लिए हम use करते हैं ruler. जब 1 meter से बड़ी हमारे पास measurements होती हैं, we're always going to pick tape measure. Option D is the right answer. Let's read the question, do it in the same pattern. Step 1, mark the important information. Let's read the question together. A student measures as accurately as possible the length and internal diameter of a straight glass tube. किसकी बात हो रही है हमारे पास? Glass tube की. Length is approximately 25 centimeters. Boxes around the numerical information. And the internal diameter is 2 centimeters. So now we have all the important information marked. मैंने आपको क्या बताया था? The first step, mark the information. Second step, when you have a table, read the heading of the table. The first one is internal diameter and then length. Question में उन्होंने पहले length discuss की है and then they said the diameter. So in this table, to confuse us, they gave the internal diameter first and then the length. We're going to put appropriate information in appropriate rows. Okay? Length हमारी कितनी है? 1 meter से छोटी है. It's in centimeters. So we are going to use a ruler for that. So a ruler. B or D? Diameter is 22 centimeters. And I told you guys, for a glass tube, we're going to use a vernier caliper. So D is the answer. Why not C? Because the length is a little too great to be measuring it by micrometer. Micrometer की हमने क्या पढ़ी थी, क्या range है? Less than 2.5 centimeters. 2.5 centimeters से छोटी lengths we prefer with a micrometer screw gauge, and it will only be tested like almost 99 times for only the diameter of a wire. हमारे पास बात हो रही है test tube की. That is why we're going to use vernier calipers, and for length, since it's in centimeters and shorter than 1 meter, we're going to pick ruler. Now, to measure volume, अगर हमारे पास regular shapes हैं, for example, हमारे पास अगर sphere है, यहाँ पर हमारे पास cube है और cuboid है, regular shapes. उनके लिए हम volume measure करने के लिए we directly apply the formula. For sphere, 4/3 pi r cube. लेकिन जो irregular shapes होती हैं, जैसे कि आपके पास stones हैं, they're irregular, like a stone like this. It's not a perfect sphere. हम इन पे volume के formulas apply नहीं कर सकते. For them, we have to figure out a way to calculate their volume. To calculate the volume of irregular shapes, we use measuring cylinders. हम regular objects के लिए भी कर सकते हैं. It's not like they can't be used, but in normal day-to-day circumstances, हम ये method use करते हैं for irregular shapes. क्योंकि regular shapes के लिए इतना बड़ा setup लगाना is not a good idea. You can simply plug in the values in your formula and figure it out. Irregular shapes के लिए हम use करते हैं measuring cylinders. अब इसका method क्या? I want you guys to memorize the steps with me right now. The first thing is that you're going to take your measuring cylinder and you're going to put a specific amount of liquid in that measuring cylinder. You can use water. Water डालना, and you're going to record the first reading, the initial reading.
Initial कहते हैं पहली को, आपने अपनी initial reading record कर लेनी है, which is the measurement before. अब हमने ये reading लेनी कैसे है? You guys will see that whenever we put liquids in a measuring cylinder, there is a little upward facing or downwards facing bump kind of a thing. We call it meniscus. When we're taking volume measurements, जब हम किसी liquid की volume measure कर रहे होते हैं measuring cylinder में, तो या तो आपको कोई upward facing bump नजर आता है या downward facing. इन bumps को हम कहते हैं meniscus. अब आप यहाँ पर देख रहे हो, there's not a perfectly round faced bump here, लेकिन the edges are slightly like they're facing upwards. तो आपको पता चल रहा है कि ये downward facing आपका meniscus है. हमने meniscus को कैसे read करना होता है? When there's an upward facing bump, you will read the meniscus from the top. Like this. And when there's a downward facing bump, you read the meniscus from the bottom. This is an accurate method of taking your volume. Now, you see कि हमारा इस water का edge, ये तो 25 को touch कर, I'm not sure if you guys can see it, लेकिन हमारा जो this line, it's touching at 24. That is why we take our measurement to be 24 cm cube. This is the initial reading. Once we have taken the initial reading, we will put our object in this measuring cylinder. हमारे पास ये irregular shaped rock था. We're going to put that rock in the measuring cylinder. उसके बाद हम क्या करेंगे? We will see कि इस rock ने कुछ पानी को displace कर लिया. And due to the displacement, displace करना यानी कि उसने उसकी जगह ले लिया. Rock ने उस पानी की थोड़ी सी जगह ले लिया, तो this water, it rose up. There is a rise in the water level. उस water level के rise से आपकी जो reading थी वो 24 से increase हो चुकी है. Let's see what is the final reading. The final reading is 31. Okay? Even though your edge is touching 32, but you're going to take 31 because that is the bottom of your meniscus. आपने अपनी final reading record कर ली, that is 31. अब इस volume, इस irregular object का volume क्या है? It is the final reading minus the initial reading. 31 minus 24, that is 7 cm cube. जितना volume rise किया, वो उतना volume है उस irregular object का. I'll repeat myself for the last time and then I'll ask you guys if it's clear or not. When you have to measure the volume of regular objects, what is feasible, जो ज़्यादा आसान है कि आप उसके ऊपर डायरेक्टली उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो. लेकिन अगर आपको irregular objects का volume measure करना होता है, तो you guys are going to use measuring cylinders. आपने कुछ water डाल देना अपने measuring cylinder में, आपने अपनी initial या फिर पहले अपनी before reading record कर लेनी है, फिर आपने अपना irregular object उस measuring cylinder में डाल देना, and then you're going to see कि water level कितना rise किया और final reading आपके पास क्या है. आपने अपनी after reading record कर लेनी है. After minus before is the volume of that irregular object. Let's do a practice question for this one. MCQs, rule number 1, mark the important data. Let's read the question together, and then I'll give you guys a minute to do this. Diagram 1, this diagram, shows a measuring cylinder containing water. 5 identical steel balls are now lowered into the measuring cylinder. Diagram 2, this one, shows the new water level in the cylinder. What is the volume of each steel ball? We have lowered 5 identical steel balls. This is the important information here. And we need to find the volume of each steel ball. Step number 1, we will record the initial volume. Initial volume is 40. V initial is 40. What is the final volume?
we final is 70. Change in volume is 30 cm cube. Now, if you had not marked the important information, you were more likely to make an error and mark the answer C. ये जो वॉल्यूम आया ना हमारे पास, ये वाटर लेवल में जो राइज आया था, ये 5 स्टील बॉल्स की वजह से है. अगर 5 स्टील बॉल्स की वजह से इतना वॉल्यूम राइज किया है, तो 1 स्टील बॉल की वजह से कितना करेगा? अगर आपके पास 1 बॉल होता, तो how can you do that? You divide that by 5 and you would get 6 cm cube as your answer. And that is option number 8. This is also a past papers question. We have 4 identical ball bearings, जिनको हमने stop किया हुआ है by 2 wooden blocks. और हमारे पास नीचे scale भी given है. And they're asking us कि एक ball bearing का क्या diameter है. हमने ऊपर क्या सीखा है, जब हम 5 हमने स्टील बॉल्स का वॉल्यूम निकाला था, 1 का निकालने के लिए we divided that by 5. तो यहाँ पर भी हमने वही सेम टेक्निक अप्लाई करनी है. अगर आपने 4 बॉल बियरिंग्स का लेंथ निकाल ली है, तो आप 1 की निकालने के लिए you will divide it by 4. So I'll zoom it. You guys try to do it and tell me what is the answer. I hope you can see the measurements finally. Okay, so we have to measure the diameter of 1 ball bearing. हमने 4 ball bearings की length calculate की. Here's 12 and here's 4. Final हमारे पास 12 है, initial is 4. We subtracted 4 from 12. 12 minus 4 is 8. And then since this is the length of 4 ball bearings, 1 के निकालने के लिए हम 4 से divide करेंगे, and then we'll get 2 centimeters as our answer. 8 by 4 is 2 centimeters.